Good morning students, welcome again in online classes of science. I am K. Mishra, your science teacher. Class 7, we have studied transportation in animals and plants. Your chapter name is transportation in organism. In this chapter we have studied about blood. We have studied that blood is a kind of liquid connective tissue. For our convenience, we can divide blood into two major parts. Its liquid part and its solid part. Liquid part is known as blood plasma. Solid part is RBC, WBC and platelet, that is combinedly they known as corpuscles. ठीक है, तो ये ब्लड के बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ ब्लड. देयर आर various very important function blood is doing in our body, in any animal's body. Now after functioning blood, now come to blood vessels. Blood vessels, students, blood flows inside the blood vessel. These blood vessels present in our body. Of course, these blood vessels are made up of what? Some special kind of muscles. These blood vessels are of three types as written in your book: arteries, veins and capillaries. Come to arteries. Let us know something about arteries. Students, arteries are those blood vessels in which pure blood flows from heart to the body part. फिर से सुनिए एक बार. Arteries are those blood vessels in which pure blood flows from heart to the body part. ठीक, आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि these arteries are situated superficially, मतलब स्किन के काफी deep into the muscles. These arteries situated deep into the muscles. These arteries contains pure blood. बच्चों, आपको प्योर और इम्प्योर ब्लड में थोड़ा सा डिफरेंस बता दें. और जब ब्लड में O2 हो, और या हम कह सकते हैं RBC प्लस O2, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं हीमोग्लोबिन प्लस O2. जब हीमोग्लोबिन ब्लड के RBC के हीमोग्लोबिन के भीतर O2 प्रेजेंट रहता है, तब ऐसे ब्लड को हम कहते हैं प्योर. बात समझ में आई? When the hemoglobin present inside our RBC of blood combines with oxygen, then its color is bright red, and such red colored blood is known as प्योर ब्लड. ठीक, अब इसी को उल्टा कर दीजिए. व्हेन ब्लड कंबाइंस विद, ये ब्लड प्लाज्मा है, यहाँ ब्लड प्लाज्मा नहीं लिखेंगे. व्हेन ब्लड प्लाज्मा कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड, then the color of such blood is greenish or brownish, black brownish in color. Then such blood is known as impure blood. समझ में आया? तो ये डिफरेंस है प्योर और इम्प्योर में. आपकी बुक में बच्चों कई जगह लिखा हुआ है प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं बताई गई है कि हम किसको प्योर कहेंगे और किसको इम्प्योर कहेंगे. इतना अपने दिमाग से आप जानिए, जैसा हमने आपको बताया है that when hemoglobin present inside our RBC of blood,
contains oxygen with that, then such blood is known as pure, and it moves from heart towards the body part. And when blood plasma combines with carbon dioxide, then such blood is known as impure blood, and this impure blood flows from body part towards the heart. इतनी बात समझ में आई? तो अब आपको ये सब समझ में आ जाएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, आर्टरीज में प्योर ब्लड, वेन्स में इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड इम्प्योर। इसका मतलब यह हुआ कि इनसाइड द आर्टरीज pure blood flows from heart towards the body part, and inside the veins impure blood flows from body part towards the heart. Clear हुआ? अब कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज are very thin vessels which are derived from arteries. Capillaries are very thin vessels which are derived from, which originate from vessels, blood vessels. आपकी बुक में लिखा हुआ है, a capillary is a very narrow tube, whereas in which wall are really thin, as that exchange of nutrients in water, in waste products and gases can take place between the blood and body fluid. मतलब capillaries are very thin vessels. Exchange of gases and nutrients takes place in between body fluid and these capillaries directly. ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि वेन्स से डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं होता डाइजेस्टिव फूड मटेरियल और एक्सक्रीटरी मटेरियल का, आर्टरीज से डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता डाइजेस्टिव फूड मटेरियल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, लेकिन कैपिलरीज से डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गैसेस का और डाइजेस्टिव फूड मटेरियल का। ठीक है? क्लियर? नाउ in your book a comparative table is given. इस टेबल को आप लोग याद करेंगे। This comparative table, this is difference between veins, arteries and capillaries. ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको? ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये वाला। इसको आप लोग अपनी HW कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। हम आपसे पूछेंगे सैटरडे को। ठीक है बच्चों? दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट देयर इज हार्ट। नाउ अबाउट हार्ट स्टूडेंट्स वी विल स्टडी लेटर ऑन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट arteries, blood vessels, arteries, veins and capillaries. We have also studied that arteries contains pure, veins contains impure blood, and these capillaries are very thin tube-like structures which helps in absorption of digested food material and releasing of waste products. They are releasing of waste material into the surrounding atmosphere, surrounding tissue fluid. Clear? This is all for today, students. Now we will study about heart in later online classes. Do your homework. Make this chart which I have given to you, difference between arteries, veins and capillaries. This is your homework and learn very thoroughly. Stay home, students, and be safe. Thank you, class sir. Thank you.